जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिलेबस सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिविल और मैकेनिकल का जो सिलेबस है वो क्या है। तो हम लोग देखते हैं, ये झारखंड गवर्नमेंट का साइट से डाउनलोड किया हुआ सिलेबस है, जिसका ये है लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये हिंदी में है। नीचे हम लोग देखेंगे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, देख सकते हैं ये सब हिंदी में है। आइए देखते हैं। पेपर 2 यंत्र। ये देखिए, शेड्यूल टू अपेंडिक्स 1, स्टैंडर्ड एंड सिलेबस। The standard of paper in general ability test will be such as may be expected of an engineering science graduate. The standard of paper in other subjects will approximately be that of an engineering degree examination of an Indian university. There will be no practical examination in any of the subjects. General ability test part A, general English. The question paper in general English will be designed to test the candidate's understanding of English and workmen like use of words. तो इंग्लिश में तो ये है। और पार्ट बी, जनरल स्टडीज। द पेपर इन जनरल स्टडीज विल include knowledge of current events of such matters as of everyday observation and experience in their significant aspects as may be expected of an educated person. The paper will also include questions on history of Indian in, and geography of nature, which candidate should be able to answer without special study. तो ये रहा जनरल स्टडीज़ का भी। अब हम लोग देखेंगे पेपर। तो ये है सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1। तो चलिए देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग में क्या है। फॉर बोथ सब्जेक्ट एंड कन्वेंशनल टाइप पेपर। पेपर 1 में है बिल्डिंग मटेरियल्स। इसमें है टिम्बर, डिफरेंट टाइप्स एंड स्पीसीज ऑफ स्ट्रक्चरल टिम्बर, डेंसिटी मॉइस्चर रिलेशनशिप, strength in different direction, defects, influence of defects on permissible stress, preservation, dry and wet roots, codal provisions for design, polywood, bricks, types, Indian standard classification, absorption, saturation factors, strength in masonry, influence of mortars, strength on masonry, strength, cement, compounds of different types, setting times, strength, cement mortar, ingredients, proportions, water demand, mortars for plastering and masonry, concrete, importance of WC ratio, strength, ingredients including admixture, admixtures, workability, testing of strength, elasticity, non-destructive testing, mixed design methods। देखिए अब सॉलिड मैकेनिक्स में क्या है। सॉलिड मैकेनिक्स में हम लोग देखते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स है, स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेस, मोर सर्कल्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन,
plane strain, more circle of strain, combined stress, elastic theories of failure, simple bending, shear, torsion of circular and rectangular section and simple members. स्ट्रक्चरल एनालिसिस में अब देखते हैं क्या है. एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट मेथड्स इंक्लूडिंग graphical methods, analysis of indeterminate skeletal frames, moment distribution, slope deflection, stiffness and force methods, energy methods, Muller-Breslau principle and application, plastic analysis of indeterminate beams and simple frames, shape factors, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में देखते हैं हम लोग क्या है. तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, डिजाइन ऑफ कनेक्शंस, सिंपल मेंबर्स, built up sections and frames, design of industrial roofs, principle of ultimate load design, design of simple members and frames. और ये 5 नंबर में दिया डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर, लिमिट स्टेट डिज़ाइन फॉर बेंडिंग, shear, axial compression and combined forces, codal provisions for slabs, beams, walls and footings, working stress method of design of RC members, principle of pre-stressed concrete design, materials, method of pre-stressing losses, design of simple members and determinate structures, introductions to pre-stressing of indeterminate structures, design of brick मशीनरी एज पर IS कोड. ये हो गया. 6 नंबर में है कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कंक्रीटिंग इक्विपमेंट, वेट बैचर, मिक्सचर, वाइब्रेटर, बैचिंग प्लांट, कंक्रीट पंप, क्रेन्स, hoists, लिफ्टिंग इक्विपमेंट, अर्थवर्क इक्विपमेंट, पावर सेवल, होई, डोजर, डंपर, ट्रेलर्स and tractors, rollers, sheep foot rollers, pumps, construction, planning and management, bar chart, linked bar chart, work breakdown structures, activity on arrow diagram, critical path, probability activity durations, event waste networks, PERT networks, time cost study, crashing, रिसोर्स एलोकेशन. ये था सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 का. अब पेपर 2 में देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, पाइप फ्लो, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, प्रेशर, थ्रस्ट, बुएंसी, फ्लो काइनेमेटिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ फ्लो इक्वेशन, फ्लो मेजरमेंट, रिलेटिव मोशन, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, viscosity, boundary layer and control, drag, lift, dimensional analysis, modeling, cavitation, flow oscillation, momentum and energy, principle in open channel flow, flow controls, hydraulic jump, flow sections and properties, normal flow, gradually varied flow, surge, flow development and losses in pipe flows, measurements, siphons, surges and water hammer, delivery of power pipes networks, hydraulic machines and hydropower, centrifugal pump types, performance parameters, scaling, pumps in parallel, reciprocating pump, air vessels, performance parameters, hydraulic ram,
hydraulic turbines, types, performance parameters, control, choice, powerhouse, classification and layout, storage, pondage, control of supply. तो नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, precipitation and related data analysis PMP unit and synthetic hydrographs, evaporation and transpiration, floods and their management PMF, streams and their gauging, river morphology, routing of fluids, capacity of reservoirs. नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग, इसमें हम लोग देखते हैं वाटर रिसोर्सेस ऑफ द ग्लोब, मल्टीपर्पस यूज ऑफ वाटर, सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, इरिगेशन सिस्टम, वाटर डिमांड असेसमेंट, स्टोरेज एंड देयर यील्ड्स, ग्राउंड वाटर यील्ड एंड वेल हाइड्रोलिक्स, वाटर लॉगिंग, ड्रेन डिज़ाइन, irrigation revenue, design of rigid boundary canals, non-overflow and overflow section of gravity dams and their design, energy dissipators and tailwater rating, design of headworks, distribution works, falls, cross drainage works, outlets, river training. ये है अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, source of supply, yields, design of intakes and conductors, estimation of demand, water quality standards, control of waterborne disease, primary and secondary treatment, detailing and maintenance of treatment units, conveyance and distribution systems of treated water, leakage and control, rural water supply, institutional and industrial water supply. नेक्स्ट है वाटर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, इसमें है अर्बन रेन वाटर डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सीवेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल, डिजाइन ऑफ सीवर्स एंड सीवरेज सिस्टम्स, पंपिंग, characteristics of sewage and its treatment, disposal of product of sewage treatment, stream flow, rejuvenation, institutional and industrial sewage management, plumbing systems, rural and semi-urban sanitation. Next is solid waste management, source, classification, collection and disposal, design and management of landfills, air and noise pollution and ecology, soil mechanics, properties of soil, classification and interrelationship, compaction, behavior, method of compaction and their choice, permeability and seepage, flow nets, inverted filters, compressibility and consolidation, shearing resistance, stress and failure, soil testing in laboratory and in in situ stress, path and application, earth pressure theories, stress distribution in soil, soil exploration, samplers, load tests, penetration tests, foundation engineering, types of foundations, selection criteria, bearing capacity, settlement, laboratory and field test, types of pills and their design and layout, foundations on expensive soil, swelling and its prevention, foundation on swelling soils. Next has surveying, classification of surveys, scales, accuracy, measurement of distance, direct and indirect method, optical and electronics devices, measurement of directions, prismatic compass,
local attraction, theodolites types, measurement of elevation, spirit and trigonometric leveling, relief representation, contours, digital elevation, modeling concept, establishment of control by triangulation and traversing, measurements and adjustment of observations, computation of coordinates, field astronomy, concept of global positioning system, map preparation by plane tabling and by photogrammetry, remote sensing concepts, map substitutes. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ये है प्लानिंग ऑफ हाईवे सिस्टम्स, अलाइनमेंट एंड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कर्व्स, grade separation, materials and construction methods for different surfaces, and maintenance, principles of pavement design, drainage, traffic surveys, intersections, signaling, mass transit systems, accessibility, networking, tunneling, alignment, methods of construction, disposal of muck, drainage, lighting and ventilation, traffic control, emergency management, planning of railway system, terminology and design relating to gauge, track, controls, transits, rolling stock, tractive power and track modernization, maintenance, appurtenant works, containerization, harbors, layouts, shipping lanes, anchoring, location identification, littoral transport with erosion and deposition, sounding methods, dry and wet docks, components and operational tidal data analysis, airports, layout and orientation, runway and taxiway design and drainage management, joining laws, visual aids and air traffic। तो ये था पूरा सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग का। थैंक यू।